Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Indian English Literature part 20, and today we will read about a very important novelist, that is Amitav Ghosh. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And these are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notifications. Okay, so let's start. We have already read so many important novelists and dramatists and poets from Indian English literature. And today we will read Amitav Ghosh, 1956 to present is his timeline. So you all know Amitav Ghosh for the very famous novel that is Shadow Lines. We will also talk about that. But before going to his novels, let's first discuss his biographical details. So Amitav Ghosh was born on 11th July 1956 in Kolkata. He was educated at Doon School, okay, and Ram Guha, he was a historian. Uh, Ram Guho and Vikram Sheth, another very important uh, Indian English novelist who is famous for the novel A Suitable Boy. So Vikram Sheth and Ram Guho, they were his friends, his school friends. He started publishing poetry in the Doon School Weekly. From his school life, he started publishing poetry in school magazine. Good evening, Pooja. Welcome. In 2009, he became a fellow of Royal Society of Literature, and he was awarded Padma Shri by Indian government in 2007. So this is about his biographical details. So biographical details में ज़्यादा कुछ नहीं है. We will directly move on to his novels, and 5 major novels के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. So the first important novel is The Circle of Reason, published in 1986. Good evening, Ektaba. Welcome. So the first important novel is The Circle of Reason, published in 1986. So Circle of Reason is the first novel, the debut novel of Amitav Ghosh. And इसमें जो main character है, नाम बहुत ही funny है. Alu is the name of the major character, and Alu is an orphan boy who lives in Lalpukur village. Okay, and he has a special physical feature. He has a lumpy head, and he is greatly admired by his uncle Balaram. Alu works as a young weaver. तो उनका प्रोफेशन क्या था? He was a young weaver, and he is closely associated with Shambhu Devnath and Toru Devi, these two other characters. And finally क्या होता है कि Alu is wrongly suspected as a terrorist, and he has to leave India, and he suffers greatly in Africa. So the whole novel is talking about the journey of Alu as an orphan, and how he faces some kind of torture and some kind of embarrassing situation when he is wrongly suspected as a terrorist. He is a very innocent boy, but wrongly suspected as a terrorist, and इसी कारण से उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. Ultimately, he also suffers in Africa. He escapes in Africa, and there also he faces a lot of problem because he is marked as a terrorist. Okay, तो ये बेसिकली है द सर्कल ऑफ रीजन नॉवेल में. तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन कैरेक्टर का नाम याद रखना. मेन सेटिंग कहाँ पर है? लालपुकुर विलेज, एंड आलू इज अ यंग वीवर. गुड इवनिंग पापड़ी. गुड इवनिंग एलिना. वेलकम.
So this is about his first novel, The Circle of Reason, published in 1986. Now we will move on to his most important novel, जो जिसका नाम आप सब जानते हो, The Shadow Lines, published in 1988. It is very famous, very beautifully written novel with minute description, and it also have diasporic element. Diasporic element. It is also partly historical novel. You can also say that. So let's discuss Shadow Lines, published in 1988. So it is famous because it won Sahitya Academy Award. ये भी याद रखना. And Shadow Lines is divided into two parts. The first part is titled as Going Away and the second part is titled as Coming Home. तो इन दोनों टाइटल में एक बहुत अच्छे से मतलब डायस्पोरिक मीनिंग है जो हम लास्ट में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो द प्लॉट. It is set in the backdrop of Indian partition and communal riots. That is why it is partly historical and also political novel. तो इंडियन पार्टीशन ऑफ 1947 जिसके अगेंस्ट में, जिसके बैकड्रॉप में ये नॉवेल का सेटिंग है. There are so many characters in the novel, that is why it often appears a bit confusing, the storyline. Okay. तो शालिनी टोपीवाला ट्रांसलेटेड इट इनटू गुजराती. ये इंफॉर्मेशन मुझे विकिपीडिया में मिला है, तो इसको भी याद रखना अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप याद रखना चाहते हो तो. तो इट वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती लैंग्वेज एंड शालिनी टोपीवाला ने इसको ट्रांसलेट किया था. तो मेन जो दोनों कैरेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं वो है जस्टिस दत्तो चौधरी एंड लियोनेल ट्रेसाउसन. एंड ये दोनों फैमिलीज के बारे में स्टोरी है. वन इज दत्तो चौधरी फैमिली एंड अनदर इज प्राइस फैमिली. प्राइस फैमिली का जो मतलब हेड है उसका नाम है लियोनेल ट्रेसाउसन. So because of these two people, a connection is already prepared. A connection is established between these two families, Price family and Dr. Chaudhary family. Yes, Papri, it is. You can also call it a partition novel. Now, the major character, except the narrator, जो major character है जिसका नाम है Tridip. Tridip is a very popular figure, and Tridip is a middle class man who is greatly adored by the narrator. Tridip is actually the uncle, the narrator's uncle. And Tridip creates a tremendous influence on the narrator, and he believes that Tridip has great knowledge as he has traveled so many places. So Tridip is like an eponymous uncle. तो त्रिदीप का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट त्रिदीप के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है Hamma, who is actually the grandmother of the narrator. The narrator's grandmother is a very conventional woman, and she does not like Tridip because according to her, Tridip spends life like a bohemian. त्रिदीप के लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो कई सारे मतलब डिस्टर्बिंग काम करते हैं, इसीलिए ठाम्मा ऑलवेज प्रिवेंट्स द नरेटर टू मीट विथ त्रिदीप एंड टू मिक्स विथ हिम. तो ये ठाम्मा का परसेप्शन है. नाउ एक्चुअली ठाम्मा कौन है? शी वाज द हेडमिस्ट्रेस ऑफ अ गर्ल्स स्कूल इन कैलकाटा, एंड दैट इज व्हाई शी इज मच डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग लेडी. तो कोई भी इधर उधर मतलब कन्वेंशन से बाहर, ट्रेडिशन से बाहर कुछ भी चीजें वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते. नाउ अनदर कैरेक्टर अपीयर्स हु इज एक्चुअली द नरेटर्स कजिन, जिसका नाम है इला. तो द नरेटर हैज सम काइंड ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन टू इला. इसका भी डिस्क्रिप्शन है नॉवेल में. Ila is the narrator's cousin who lives in London. It is just an adolescent fantasy which he had with Ila. But finally, Ila marries Nick, another boy, and Tridip falls in love with May. May is a member of Price family. May is a member of Price family. Tridip falls in love with May. तो अब जो टाइटल में है कि गोइंग अवे एंड कमिंग होम, these two things are very important because at certain point of time, Hamma wants to bring her Jathamoshai, which means her uncle, to India from Dhaka. So at the time of partition, Jathamoshai is an old man and he is already very much ill.
So Thamma thinks that he should not live alone in Dhaka and he must come to India. So Thamma takes the initiative to bring him back to India. Okay. Now, when Thamma is going to Dhaka, she feels a great nostalgia as Dhaka is her home. But the narrator cannot understand the same. So the two titles, going away and coming home, for the narrator, it is going away from the home, right? Because narrator के लिए home है Calcutta. तो नैरेटर अपनी ग्रैंडमदर को कह रहे हैं कि यू आर गोइंग अवे टू ढाका फ्रॉम कोलकाता, बट हम्मा इज सेइंग दैट नो, आई एम कमिंग होम फ्रॉम कोलकाता. ढाका इज माय ओरिजिनल होम. You cannot say that I am going away from home because it is my root. I am born and brought up in Dhaka. So Dhaka is my root and I am returning to my motherland. So it is not for me, for me it is not going away, rather it is coming home. So Amitav Ghosh beautifully blends these two things, and exactly these two titles add the diasporic element within the text, that rootlessness and feeling of or nostalgia for motherland. ठीक है. तो रूट मतलब मदरलैंड की तरफ जो एक अट्रैक्शन है वो अलग ही होता है, जो ठामा फील कर सकते हैं, बट द नरेटर एंड द अदर कैरेक्टर्स दे कैनॉट फील बिकॉज दे थिंक दैट कैलकाटा इज देयर होम, बट फॉर ठामा ढाका इज हर होम. So very beautifully expressed throughout the novel. So Thamma is in dilemma that whether it is going away. The narrator is in dilemma that whether it is going away from Kolkata or coming home to Dhaka. ठीक है. तो इससे एक पार्ट है नॉवेल का. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द नॉवेल त्रिदीप sacrifices his life to rescue May from 1963-64 communal riots in Dhaka. ठीक है. तो इससे बेसिकली नॉवेल एंड होता है. एंड द टाइटल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, शैडो लाइन्स. तो द शैडो लाइन्स refers to the border between ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, जो पार्टीशन के टाइम था. And the border becomes ambivalent when the feeling of nostalgia and attraction towards motherland arrive. ठीक है. तो border line becomes very shadowy when Thamma travels from Kolkata to Dhaka and the narrator and she thinks that she is going home. Then the border between the two countries, border between the two nations becomes meaningless. And that is why it is shadow lines, which means the border is not real. It is actually created by mankind. It is created by human. It is not geographical border, rather it is the border inside your mind. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड शैडो लाइन. ठीक है. तो बहुत ही एक अच्छी नॉवेल है शैडो लाइन्स. दो इट हैज सम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, समटाइम्स इट अपीयर टू बी एम्बैरेसिंग बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसको पढ़ना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट द प्लॉट इज वेरी ब्यूटिफुल. एंड जो थीम अमिताभ घोष ने एक्सप्रेस किया है, नॉस्टैल्जिया एंड डायस्पोरिक जो एक एलिमेंट है, फ्लेवर है इसके अंदर, वो बहुत ही अच्छा. ठीक है. दैट इज वाई इट ओन द साहित्य अकादमी अवार्ड. So that is about the novel Shadowline. And one thing more, that Thamma dislikes Tridib and also Thamma dislikes Ila. So when she comes to know that narrator has a special attraction towards Ila, she also warns the narrator that Ila is a whore. Exactly ये word उन्होंने use किया है, Ila is a whore. So do not pursue her so much. ठीक है. तो हर कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से नॉवेल में एक प्रॉपर पोजीशन में है. इला का एक अलग सा कैरेक्टर है, थम्मा इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, त्रिदीप इज अ डिफरेंट कैरेक्टर. हर एक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है नॉवेल में. यस यस राइट, इट्स अ वेरी लॉन्ग नॉवेल, समटाइम्स अपीयर मोनोटोनस बिकॉज बीच में बहुत ही लंबा डिस्क्रिप्शन है जो कभी कभी यूजलेस लगता है. बट व्हेन दिस पर्टिकुलर एरिया कम्स कि थम्मा इज गोइंग अवे एंड कमिंग होम, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है. एंड एट द एंड जब त्रिदीप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उस पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग. ठीक है. तो चलो, so this is about Shadow Lines, the most important novel of Amitav Ghosh. Moving on to next work, that is In an Antique Land, published in 1992. तो अब तक हमने दोनों नॉवेल डिस्कस किया है, सर्कल ऑफ रीजन एंड द शैडो लाइन्स. इन एन एंटिक लैंड इज नॉट अ नॉवेल, इट इज एक्चुअली अ नॉन फिक्शनल वर्क.
एंड इसमें दो डिफरेंट नैरेटिव का एक कलेक्शन ऑफ टू डिफरेंट नैरेटिव, ठीक है। तो बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ एसे, आप कह सकते हो लॉन्ग एसे। तो इसमें दोनों डिफरेंट नैरेटिव्स की बात हो रही है एंड इट इज ऑल्सो पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल, यू कैन से। So in the first narrative, in the first story, Amitav Ghosh goes to a small village of Egypt named Latafia to write his PhD dissertation. ये फर्स्ट स्टोरी में दिखाए जाते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस होता है। एंड सेकेंड स्टोरी में ये मतलब फर्स्ट नैरेटिव इज अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू लाताफिया टू इजिप्ट, ठीक है। एंड सेकेंड स्टोरी में बताया गया है कि उनके जो रिसर्च का टॉपिक था, पीएचडी डिसर्टेशन का जो टॉपिक था वो क्या था, द लाइव्स ऑफ 12th century Jewish merchant Abraham ben Yeju and his Indian slave. So he wants to uncover a history, a historical research on on the life of a Jewish merchant, ठीक है, एंड उसके पास जो इंडियन सर्वेंट था, इन दोनों के लाइफ स्टोरी के बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं एंड व्हाट मटेरियल डिड ही गेट फ्रॉम दिस जर्नी। तो ये सेकंड स्टोरी में बताया गया है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन और द कलेक्शन ऑफ टू डिफरेंट नैरेटिव्स एंड इनको एक साथ में पब्लिश किया गया है अंडर द टाइटल इन एन एंटीक लैंड। गुड इवनिंग कृति, वेलकम, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि सेट इन लाताफिया इजिप्ट में सेटिंग है एंड इट इज नॉन फिक्शनल वर्क। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ अमिताभ घोष इज नॉट अ नॉवेल। तो इन एन एंटीक लैंड इज नॉट अ नॉवेल, इट इज ए नॉन फिक्शनल वर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, अलग एक नॉवेल है द कैलकाटा क्रोमोसोम पब्लिश्ड इन 1995। द टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रोमोसोम इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ साइंस। तो यस, कैलकाटा क्रोमोसोम इज अ साइंस फिक्शन नॉवेल। तो ये भी याद रखना कि अमिताभ घोष साइंस फिक्शन नॉवेल कौन सा है, वो है कैलकाटा क्रोमोसोम एंड इसमें दोनों सेटिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, टू सेटिंग्स आर अवेलेबल, वन इज कैलकाटा अनदर इज न्यूयॉर्क। एंड ये जो न्यूयॉर्क का सेटिंग है, इट इज एक्चुअली अ फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ न्यूयॉर्क। फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ न्यूयॉर्क मीन्स कि इट इज सेट इन फ्यूचर न्यूयॉर्क, नॉट द प्रेजेंट न्यूयॉर्क, ठीक है। कैलकाटा में जो सेटिंग है वो तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब उस टाइम में प्रेजेंट है, बट न्यूयॉर्क का सेटिंग है फ्यूचरिस्टिक सेटिंग। जैसे साइंस फिक्शन नॉवेल में हमने देखा कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 1000 साल बाद किसी दुनिया का सेटिंग होता है, वैसे ही यहाँ पर भी। And it is important that the book is loosely based on Sir Ronald Ross's winning of Nobel Prize. तो सर रोनाल्ड रॉस को किस लिए नोबेल प्राइज मिला था? बिकॉज ही डिस्कवर्ड द मेडिसिन ऑफ मलेरिया, राइट। तो रोनाल्ड रॉसेस डिस्कवरी एंड हिज विनिंग ऑफ नोबेल प्राइज, इसके ऊपर बेस्ड है ये नॉवेल एंड इट ऑल्सो रिसीव्ड आर्थर सी क्लार्क अवार्ड इन 1997। तो मेन कैरेक्टर का नाम है अंतर, he is a resident of future New York, this is important, futuristic vision. So Antar is a resident of future New York and his former employer Murugan has a fascination with the life of Ronald Ross. Fascination in the sense that he is very much obsessed with the life of Ronald Ross, ठीक है। तो मुरुगन क्या कोशिश कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर न्यूयॉर्क में भी है, बट ही इज सो मच ऑब्सेस्ड विथ द लाइफ ऑफ रोनाल्ड रॉस एंड हिज डिस्कवरी दैट ही कम्स टू कैलकाटा टू डू अ रिसर्च ऑन दैट, टू अनकवर द मिस्ट्री कि कैसे रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का जो मेडिसिन है वो डिस्कवर किया था, उसके पीछे क्या स्टोरी है, कहाँ से उन्होंने ये आइडिया को लिया था। तो द टोटल जर्नी ऑफ रोनाल्ड रॉस व्हाइल डिस्कवरिंग द मेडिसिन, द वैक्सीनेशन, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं मुरुगन एंड मुरुगन इसलिए कैलकाटा आ रहे हैं न्यूयॉर्क, ठीक है। बट अंतर रियलाइजेस दैट मुरुगन इज ट्राइंग टू डू समथिंग सीक्रेट, so he tries to keep track on Murugan's research and he comes to know finally that Murugan unearths the secret of Ross's research on malaria। क्या सीक्रेट है इसके पीछे, वो मुरुगन ने फाइंड आउट कर लिया है। दिस साइंटिफिक मूवमेंट कैन रेस्टोर लाइफ, एंड एक अलग से मूवमेंट की बात हो रही है जिससे आप लाइफ को रेस्टोर कर सकते हैं। कैसे? मतलब द डिसाइपल्स और द फॉलोअर्स ऑफ दिस मूवमेंट दे कैन एक्सचेंज देयर क्रोमोसोम
or rather I should say that they can transform their chromosome into another man's body, and क्रोमोसोम की ट्रांसफर से एक दूसरे पर्सन के अंदर लाइफ क्रिएट हो सकती है। जैसे फ्रैंकेनस्टाइन ने कोशिश किया था कि विद द करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही कैन पुट लाइफ इनटू अ डेड बॉडी, जैसे वो मॉन्स्टर बना था, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट है कि they can transfer their chromosome into another people's body. And Ross used malaria parasites to cure syphilis, another important disease. तो ये जो क्रोमोसोम ट्रांसफर टेक्निक है, फाइनली द नॉवेल इज एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट दैट दिस क्रोमोसोम ट्रांसफर टेक्निक विल हेल्प टू प्रिवेंट द न्यू वेरिएंट ऑफ मलेरिया। ये एक नया प्रिवेंशन का मेथड, ठीक है, जो एस्टैब्लिश कर रहे, जो डिस्कवर कर रहे हैं मुरुगन वाइल रिसर्चिंग ऑन द लाइफ ऑफ डोनाल्ड। तो दिस इज अबाउट कैलकाटा क्रोमोसोम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है जरूर, ठीक है। The next novel of today's class is The Glass Palace, published in 2000. The Glass Palace. Glass Palace क्या है? It is ये सबसे पहले पढ़ लो। It is divided into 7 parts. ठीक है, बहुत ही लंबा नॉवेल है, बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन थे। तो इट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल, प्रॉपरली हिस्टोरिकल नॉवेल सेट इन बर्मा, मीन्स म्यांमार। तो याद रखना कि अमिताभ घोष का प्रॉपरली हिस्टोरिकल नॉवेल है द ग्लास पैलेस, एंड द टाइटल इज टेकन फ्रॉम ग्लास पैलेस क्रॉनिकल, जो कि ये बार्मा का ही एक क्रॉनिकल था। बार्मा ने ही, मतलब बार्मिश लैंग्वेज में लिखा गया था ग्लास पैलेस क्रॉनिकल, वहां से टाइटल लिया गया। The major character is Rajkumar, who is a 11-year-old boy who goes to Mandalay to find a woman called Macho. ठीक है, and Rajkumar is the only living member of his family. So when he goes to Mandalay, then third Anglo-Burmese war started, and he falls in love with another girl called Dolly. Rajkumar pursues a very successful career there at Mandalay, एंड एक दूसरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है किंग थिबो। किंग थिबो इज ट्राइंग टू सेटल एट रत्नगिरी गोवा। वो एक पॉलिटिकल मतलब समझौता के लिए वहां पर गए हैं गोवा में। फाइनली डॉली बिकम्स राजकुमार्स वाइफ। तो बीच में कई सारे स्टोरी है, 7 पार्ट में डिवाइडेड है, बहुत ही लंबा है, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ समरी। तो मेजर कैरेक्टर्स का नेम याद रखना, इट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल, टाइटल का सोर्स, दीस आर द मेजर, ठीक है। लास्ट नॉवेल ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज द हंग्री टाइड। ये बहुत बार क्वेश्चन में आए हैं कि हंग्री टाइड का सेटिंग कहाँ पर है। इट इज सेट इन आवर वेस्ट बंगाल, दैट इज सुंदरबन। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 2004। तो सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफन इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। सेट इन सुंदरबन, एंड मेन दोनों कैरेक्टर का नाम क्या है? कानाई एंड पिया। दे मीट इन ट्रेन एंड एक्सीडेंटली दे get to know each other, and they realize that both of them are going to सुंदरबन, बट दोनों का पर्पस अलग है। कानाई जा रहे हैं सुंदरबन में टू मीट हिज अंकल निर्मल, हु इज नॉट फिजिकली वेल, and Pia travels to Sundarban to do a research on river dolphins. वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के काम में जा रहे हैं, ठीक है। Now while after reaching Sundarban, she meets a fisherman who is fishing in a restricted area, ठीक है। एंड उसके साथ पिया का इंटरेक्शन होता है। पिया अपने रिसर्च के लिए उनका हेल्प मांगते हैं, जिसका नाम है फकीर, ठीक है। फकीर इज द नेम ऑफ द फिशरमैन। Now, accidentally, Kanai also comes to the same place, and Kanai meets Fakir's wife, Moina. Okay? तो कानाई के पास क्या होते हैं, उसके जब वो अपने अंकल के घर जाते हैं, सो अंकल का एक नोटबुक था। निर्मल is the name of his uncle, and Nirmal's notebook Kanai has got, and Kanai realizes his dedication to Marxism. His uncle was a great Marxist. Now, Nirmal's friend Haren informs them that a cyclone is coming. ठीक है, अब जब साइक्लोन की बात हो रही है तो कानाई फील्स वेरी मच टेंस दैट फोकीर एंड पिया कहाँ पर है, वो भी तो इसी जगह पर आए हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे आर ट्राइंग टू फाइंड फोकीर एंड पिया, जो नोटबुक है वो लॉस हो जाता, नोटबुक बिकम्स मिसिंग, एंड कानाई प्रॉमिसेस हिज आंट टू रीराइट इट फ्रॉम मेमोरी अगेन।
Finally they find out Fokir and Pia. Both of them tie themselves onto a tree in an island and they are safe. And at the end of the novel क्या होता है कि Pia plans to work on a new project on a conservation program along with Nilima. Who is Nilima? Nilima is Kanai's aunt. अंकल का नाम है निर्मल, आंट का नाम है नीलिमा. तो नॉवेल के एंड में हमें ये देखने को मिलता है कि पिया प्लान्स टू वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन अ कंजर्वेशन प्रोग्राम एट सुंदरबन अलोंग विथ नील. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द हंग्री टाइड. टाइटल से ही आपको पता चलता है कि सी वाटर का मेंशन यहाँ पर है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट टाइड. तो ये याद रखना भी इजी है कि इट इज सेट इन सी सेंटर्ड एरिया और अ रिवर सेंटर्ड एरिया दैट इज सुंदर. ठीक है. तो बेसिकली दीज आर द मेजर नॉवेल्स ऑफ अमिताभ घोष, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शैडो लाइन्स ऑब्वियसली. बट बाकी जितने भी नॉवेल्स हैं उनको भी एक बार इंपॉर्टेंट नॉवेल्स को एक बार समरी को पढ़ के जाना, रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स एंड टाइटल का सोर्स अगर मेंशन है तो जो भी बुक्स आपके पास है उससे अमिताभ घोष को जरूर एक बार पढ़ लेना. ठीक है. So that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. So tomorrow at 8:30 p.m. we will talk about Pope's essay on criticism. ठीक है. हमने apology for poetry किया है last class में. Tomorrow we will do essay on criticism by Pope. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8:30 p.m.